So what we have completed till yesterday? कल तक हम लोगों ने कहाँ तक complete कर लिया था? Types of server complete हो गया था. Mainframe तक हो गया था सर. Mainframe server तक हो गया. तो किसी को कोई problem है main तक में? No sir. No sir. Technical more intensive. Okay. Is my screen visible, guys? Career, sorrow, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, guys. So that's what we have covered till the mainframe and data sets and all. So I hope that everyone watched that particular video, the YouTube video that I have shared. आप लोग सबने उस वीडियो को देख लिया होगा जो मैंने भेजा था, correct? Yes. नहीं देखा. Okay. Yes, sir. So today is your day 2 of administration 05. आज हमारा day 2. So as you all know कि the server works over the operating system. Server हमारा कहाँ काम करता है? Operating system. To make the server work like a server को किसी server की तरह काम कराने के लिए या किसी भी terms को किसी भी चीज के लिए operate कराने के लिए we need some kind of operating system. हमें कुछ ना कुछ operating systems की जरूरत होती है. So what is operating system? What is operating system? Operating system क्या है? Operating system, Windows 10, Windows 11, Windows 7. So if I say yes, please. Operating system is a software that is the medium between the hardware and the users. Very nice. It is the medium between a hardware and a user. So operating system always act as a middleware. कह सकते हैं between the user and the hardware. Right? Ajay Kumar sir. Sir, operating system used for input data processing and output, sir. Very well. Very nice. Yes, sir. So this, so as many as user, as many as person, the operating system will be defined in a multiple. जितने लोग होंगे, जितने ज़्यादा terms होंगे, उतने ज़्यादा तरीके से हम operating system को define कर सकते हैं. So over here, if I say yes, yes, sorry. An operating system is the program that, after being installed, initially loaded the computer by a boot program to manage all the other application program in the computer. Means is, what does it mean? Meaning thing is, over here when you turn on the operating system, when you try to turn on your actual system, so if with the help of boot, it actually appears and it let other tasks, other program to get load and work perfectly over a computer. मतलब आप जितनी बार आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, बूटिंग प्रोसेस के थ्रू आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशिएट होता है, वो लोड होता है और वो अदर एप्लीकेशंस जो भी उसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं उनको प्रोवोक करता है
कि वो अपने functions को काम करे और इन चीजों को process करे. So that is also the work of operating system. So an operating system is a program that after being installed, initially loaded the computer by a boot program. So boot program is a thing that we are going to discuss in the further. But in the normal way, we can say operating system help us operate that machine has to perform. It manage all the hardware, software components. It manage all the hardware and software components. This is what it says. Understood? Right. Now, if I ask types of operating system, then what are the types of operating system we have? So we have to tell. Sorry. Sir, can we tell? Yes, please. Sir, Windows operating system, Linux operating system, and Mac operating system. Very nice. Thank you, sir. We are having a Linux. We are having Windows. We are having Mac. So these are the types of operating system. And if I talk about the category of operating system, अगर हम category पूछे तो, so the category of operating system says real time, OS, time sharing OS, and batch operating system. So just like that, we are having a 5 or 6 type of the categories. हमारे पास 5 से 6 तरीके के categories है operating system, right? Now, it manages all the hardware and software components. So what is hardware? Hardware क्या है? Very basic question. What is hardware? So tangible and tangible peripherals of the computer that are attached with the computer that we can see and touch. That we can feel and touch. Okay. So if I say here, hardware refers to internal or external device. Hardware एक तरीके का आपका internal और external device है. Very basic, right? Processing and much. Right. Which help to provide the command to the operating system to perform the task. Operating system to perform the task. That is what the hardware is, right? हार्डवेयर एक तरीके का इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस है जो आपको हेल्प करता है किसी भी टर्म्स को इनपुट या आउटपुट
या फिर किसी भी स्टोरेज यूनिट को प्रोसेस करने के लिए. Guys, this is the thing. Now, if I say what is driver? Driver क्या है? Anyone? What is driver? Very nice. So a driver or a device So device driver or a driver is a set of files that tells a piece of hardware how to perform the function by communication, how to perform the function of communication by the computer or an operating system. With computer operating system is, what does it mean? So driver act as a middleware. यहाँ पे जो driver है वो आपके middleware की तरह काम करता है hardware और software के बीच. If I say I am having a mouse, I am having a trackpad, okay. So with those trackpad I am having the 3 finger slide up, 3 finger slide down, and the functions need to be activated. और ये function हमें activate करना है. Then how I can make it? I can make it only with the help of terms called as driver. इन चीजों को हम तभी activate कर सकते हैं जब हमारे पास एक term होगा जिसको हम driver कहते हैं. That's it. So driver is a middleware. Driver क्या है आपका एक middleware. Just like that, it stores all the functionality, not stores the functionality, but it provokes the functions of the hardware, how you are going to interact with the operating system. ये आपके हार्डवेयर के functions को provoke करता है कि आप operating system के साथ कैसे attract करेंगे, कैसे interact करेंगे, and how you are going to process things. और आप चीजों को कैसे process करेंगे. This is what it is. Okay. So let me show you one diagram. हम यहाँ पे diagram आपको दिखा दें. बकवास हो गया. Sir, we can say driver is a software application. Software. Means driver is a software, a program. Driver is not a software. Software basically contains the every set of instructions that need to be done. Driver is just responsible for running all the functionalities of your hardware set. That's it. It is not a software. It's not fully a software, but a middleware, right, sir? It is a middleware. Okay, sir. Which is responsible for only one thing, to run your hardware system. ये सिर्फ एक ही चीज के लिए responsible है आपके hardware system के लिए. So like if you have ever if you have gone through the purchase of for purchasing the laptop or any kind of operating system, so the vendor says कि come after 2 to 5 hours. अब 2 से 5 घंटे के बाद आइए आप फिर laptop ले जाइएगा. Why after 2 to 5 hours? Why not right now? Because he will say कि I need to update the drivers, I need to update the applications. हमें application और drivers को update करना है. Whenever you will purchase a motherboard, after purchasing the motherboard, they will give you one compact track like CD. जब भी आप motherboard purchase करेंगे, तो वो लोग आपको एक CD देंगे. And what does that CD contains? CD contains the every functions of the driver, which is responsible for running your all hardware component. जो आपके पूरे हार्डवेयर कंपोनेंट को रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल. That is the thing. To run at optimal level, to access all the feature. In the same way, like when you purchase a new phone, जब आप नया फोन परचेज करते हैं तो you have to go to the settings and turn on all the features. आपको सारे सेटिंग्स में जाना पड़ता है और आपको फीचर्स को ऑन करना पड़ता है. डबल टैप पावर ऑन, डबल टैप पावर ऑफ, 2 fingers slide down स्क्रीनशॉट, 3 fingers up मिनी स्क्रीन, राइट. 2 फिंगर ऊपर से नीचे किए तो स्क्रीनशॉट होगा, 3 fingers नीचे से ऊपर स्लाइड कर रहे हैं तो मिनी स्क्रीन हो जाएगा. एंड like double tap power on, double tap power off. तो ये सारी चीजें क्या है? These are the functions of hardware, but it need to be turned on. So when it is turning on, who is invoking them? कि you have to act like this. So this is done by the driver. So you are just turning on the drivers.
आपको वहां पे ड्राइवर्स के फंक्शंस दिए होते हैं जिसको आप ऑन कर रहे होते हैं एंड इट इज गोइंग टू वर्क और वो वहां पे काम से दिस इज व्हाट इट इज अंडरस्टूड वेरी नाइस what is the next that we are having the next that we are having you are called as a software जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास सॉफ्टवेयर what is software क्या है so we can say it is a set of instructions that we all know Software is a set of instructions in the form of program which used to operate computers and execute. so this is the software this is what the software you have so the software is a set of instructions in the form of program which is used to operate the computer and execute the specific task it always says the same the set of instructions and these are the four types of softwares we have तो सॉफ्टवेयर को हमेशा से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिफाइन किया गया और इस चार टाइप के हमारे पास सॉफ्टवेयर है दैट वी यूज सो वी आर नॉट गोइंग इन द डीप डाइव ऑफ डिस्कशन ऑफ ऑल दोस फोर टाइप्स इट इज जस्ट फॉर द नॉलेज ये यहाँ पे हम लोग कंप्लीट डीप डाइव पे नहीं जा रहे हैं इन सब ड्राइवर्स को इन सब सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ एज अ नॉलेज बेस हम इस चीज को डिस्कस नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन the next section says कि what is firmware anyone can tell me what is firmware firmware क्या है what do you understand by the term firmware It is a control device to support a software. it is a firmware is a device Sorry? firmware is a device Actually, firmware is software that provides a basic mission instruction that allows the hardware to function in the computer. allows the hardware to function in a computer okay next one Firmware is a software program on the hardware device which perform function like basic input-output task. very well next next one The combination of software and hardware. combination of software and hardware very well and okay just tell me one thing have you ever seen कि after updating your mobile phone your battery optimization got a lot like the batteries is like the backup of the battery got increased the brightness got optimized the refresh rate of your screen got enhanced have you feel this आपने इस चीज को फील किया है कि जैसे ही फोन को अपडेट किया
आपका जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन था वो काफी ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा कंजप्शन नहीं हो रहा बैटरी का, अब सही हो रहा। उसके बाद आपका जो कैमरा था उसमें ज्यादा फीचर्स आ गए थे, कैमरा इज हैविंग लॉट्स ऑफ द फीचर, इट कैन टेक द मोर क्लियर पिक्चर्स इन द डिटेल वे, वो और ज्यादा डिटेल वे में पिक्चर को ले सकता है इन द कलर कॉम्बिनेशन, कॉन्ट्रास्ट, एवरीथिंग। Second thing says कि the brightness of your screen got optimized, you are having a very eye friendly brightness, आपके पास काफी eye friendly brightness है। refresh rate of your screen got optimized, जो आपका refresh rate है वो काफी enhance हो गया, optimize हो गया। Have you ever feel this kind of the things? Or have you ever turned on the eye protection? When you turn on the eye protection, your screen turns out little orange, right? आप जैसे आई प्रोटेक्शन ऑन करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो लिटिल ऑरेंज में हो जाएगा। Who is telling all those things? Where these things are being stored? Or if I say कि I'm having a camera, तो who is telling the camera कि you have to capture the photo and you have to save at this location? If I'm saying कि you are the phone, you have to act like a phone, who is telling that? I'm having the motherboard. Motherboard says कि here is going to the processor. Who is locating कि there is the processor? You have to take the data from RAM to the processor. Who is telling कि this is the slot of RAM? कौन बता रहा है कि ये RAM का slot है? कौन बता रहा है कि आपको फोन कैमरा से फोटो क्लिक करके आपको इस लोकेशन पे सेव करना है? कौन बता रहा है कि आपने जब अभी आई प्रोटेक्शन ऑन किया तो आपको ऑरेंज कलर में हो जाना है? Who is telling these things? Who is telling my hard disk that you just need to read, you just need to store, means read and write the data? आपको सिर्फ read और write करना है data. Who is telling me this thing? Who is telling the display कि you have to display this content? Who is telling my Wi-Fi कि you have to act like a Wi-Fi? You are just responsible for connecting with the different set of or this type of the signals. Wi-Fi को कौन बता रहा है कि आपको इस टाइप के signals के साथ connect होना है? Who is telling these all things? That is a firmware. So firmware actually installs, actually having the feature, the functionality of every single hardware resource, whether it is your keyboard, mouse, trackpad, hard disk, RAM, processor, graphics card, NIC, your chips, all the chipsets, all the USB drives, everything. Everything has their own set of firmware. Firmware actually stored in the particular drive in a particular hardware segment to make them function or to make them कि I am this device, my function is this and I can perform this set of function. In the simple language we can say if firmware is the set of functionality of your operating, not on the operating system of your particular device. Firmware आपके डिवाइस का फंक्शनैलिटी है जो बताता है कि आपका डिवाइस किस स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करे या फिर उसके क्या क्या फीचर है, वो क्या क्या चीजों को कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है. That is what actually the firmware is. And every single hardware will have their own set of firmware. आपका हर एक हार्डवेयर जो है वो कीबोर्ड हो, माउस हो, एनआईसी हो, ट्रैक पैड हो, स्क्रीन हो, हार्ड डिस्क हो, कैमरा हो, एलईडी लाइट हो, कुछ भी हो, सबका अपना एक फर्मवेयर होगा. दैट इज नेचर, दैट इज लॉ. वो होगा ही होगा. इन द एब्सेंस ऑफ फर्मवेयर इफ यू आर मेकिंग योर चिपसेट टू वर्क, दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर आपके पास फर्मवेयर नहीं है और आप चिपसेट में वो चीज काम कराने का कोशिश कर रहे हैं कि आपका डिजायर्ड है, वो नहीं. That is not possible because your motherboard or whatever your chipset doesn't know where the things are located or what is the functionality need to be performed by which device और किस device के साथ क्या functionality store कराना है. Even though if you will take the RAM and if you will take the SSD, they both look similar every time. दोनों similar दिखेंगे आपको. You can go on the Google and you can have a check. They both will look the similar. They both get installed in the same way. दोनों एक ही तरीके से इंस्टॉल होते हैं, एक ही जैसे हैं. Then one is for storing unit, one is for processing the things, one is for making the things processed. Who is differentiating both of them? कौन इन दोनों में differentiate कर रहा है? From where? Who
is telling your camera that you have to take the color contrast in the detailed way. This is the thing that appears and you have to represent the image in this way. Firmware. And the firmware is stored on every single hardware component. Firmware हमेशा हर एक single hardware component के ऊपर store हो. Understood, guys? And the thing is, the firmware is not removable. It is only updatable. वो सिर्फ update होता है, वो remove नहीं होता. And update by whom? By anyone? No. Update is only by their dedicated manufacturers. Update सिर्फ उनके dedicated manufacturers होगा. BIOS is not considered as a firmware. BIOS आपको firmware के term पे consider नहीं किया जाता. It communicates with firmware. That is why we call it as a firmware. वो I will explain you later on why it is called as. वो क्यों कहला रहा है? But the thing is कि whatever the company of the laptop you are using or hard disk or mobile phone you are using, they are not completely totally manufactured by them. No, that are assembled by that manufacturers. HP, Lenovo, they are having their Intel processor. They never say कि HP is having their HP processor. No, Intel processor from the Intel. RAM might be from the Crystal, might be from the A data, might be from the Seagate. Most probably they use the A data. Most probably A data को use करते हैं. So the RAM is from the A data. The hard disk from the Seagate or a WD, Western drive. Hard disk को WD का ज़्यादा prefer करते हैं. So if I say कि I want to update my hard disk, so who is going to give me the update? HP or a WD? HP. Sorry, WD, not the HP. I just made it wrong. WD. Why? I want to update my hard disk. हमको यहाँ पे hard disk update करना है. So the Western drive will provide me the update of that particular hard disk. वो सिर्फ particular hard disk को update करे. And the update is always made by their manufacturers. And update हमेशा उनके manufacturers देते हैं. This is the thing. I will show you this thing as well. हम ये चीज आपको दिखाए भी देखिए. Okay. So please note it down and just let me know, is this understood? समझ में आया? सर आप पढ़ा और सर समझ में आए Hey.
hardware manufacturers. Is the noted, guys? Noted? Very nice. If I show you, so I'm having the Seagate hard disk. I'm using the Seagate. Let me go with my HP portal. यार पट गया। Here is the BIOS and here is the firmware. BIOS is also known as the system firmware. BIOS is not a firmware, it is known as a system. Okay. Here I am having the firmware. If I drag down, I am having a GST hard disk, that was the previous hard disk that I am having. And right now I am using the Seagate one. So there is a Seagate. चली चली रे चली हे वाद बीमार बड़ भाई नेट की ऐसी हवा चल गई रे दोस्त नैया दिल में आना रे तड़पन रे चम 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 लाड़ी साड़ी जोड़नी करेंगे रे मेरी कैसे नहीं अभी छोड़िए मैं गया वे लॉन्गे ड्राइवे बहुत ड्राइवे से ना पेन में टूटू कुड़िए By default ये hard disk को select करेगा. When it selects the boot device that is your hard disk, then it will move ahead towards the boot. Now bootloader will detect in this particular hard disk where the operating system is stored. अब इस डिवाइस के अंदर, इस हार्ड डिस्क के अंदर किस लोकेशन के ऊपर आपका हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड है, तो we say C. In the C drive, what is the location of that file? C drive के अंदर उस फाइल का क्या लोकेशन? When it find, it will invoke the operating system. जैसे वो invoke करेगा operating system को work करने के लिए, and operating system will directly interact with the kernel to do the system process and the user space. जहाँ पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के साथ इंटरेक्ट करेगा, जहाँ पे वो सिस्टम प्रोसेस और यूजर स्पेस को हैंडल करेगा. सिस्टम प्रोसेस to make the things work, to activate everything, and the user space which is going to have your username or data. User space यहाँ पे आपके username और password को स्टोर करा के रखा हुआ रहता है, और जो system processes to running everything that is your system calls, at what the processes need to run, what are the necessary things, what are the Windows resources, जो भी Windows resources हैं, जो भी background processes हैं, जो भी सारी functionalities हैं, what the user installed, make them work again. So that is what the system processes need to be get activated by the kernel. So the kernel over here is known as the father, or we can say that the mother and father of every operating system. जो kernel होता है, वो mother father होता है आपके पूरे operating system का. And Windows uses NT kernel. Windows का जो kernel है, उसको बोलते हैं हम लोग NT kernel, New Technology Kernel. Okay. The Windows uses this. So the kernel is responsible for handling all the system processes.
That can be of making call, that can be of invoking, that can be of utility, that can related to the software. कर्नल आपके सारे सिस्टम प्रोसेसेस, सारे यूटिलिटी कॉल्स को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल. Okay. Yes. So it is going to handle all the system processes. वो सारे system processes को handle करेगा. And after getting validated over here, यहाँ पे validate होने के बाद you are going to interact with the user space. आप यहाँ पे अपने user space के साथ interact करेंगे. If the thing is not matched, then it will break you over here. अगर चीजें मैच आपके यूजर स्पेस के साथ नहीं करती हैं तो आपको यहीं पे वो ब्लॉक कर. दिस इज योर कंप्लीट बूटिंग प्रोसेस. ये होता है आपका पूरा बूटिंग प्रोसेस. इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीवन? सर एक बार कर्नल का बताइए ना. क्या मतलब बताइए? कर्नल मतलब क्या है वही नहीं समझा इसमें. कर्नल मतलब क्या होगा नहीं समझ. ये बूटिंग प्रोसेस समझ में है? Is this booting process is understood? Yes, sir. Very well. So let me show you one image. एक हम इमेज दिखा. This is the image. Application shell kernel actually work over the machine layer. Machine layer. कर्नल आपके मशीन लेयर के ऊपर हैंडल करता है. तो इन द सेम टर्म वी कैन से कर्नल हैंडल ऑल द प्रोसेस एग्जीक्यूशन. कर्नल आपके सारे प्रोसेस एग्जीक्यूशन को हैंडल करता है. मींस इफ आई से कि आई डबल क्लिक ऑन दिस पीसी, ओके, so this PC is getting fetched from the hard disk and going to the RAM. Over the RAM, how much time you have to wait? What are the necessary files will be needed? That all the things are managed by the kernel. मैंने this PC पे ओपन किया. this PC कहाँ है? विंडोज का इंस्टॉल्ड है आपके हार्ड डिस्क पे. हार्ड डिस्क से फेच होकर के वो रैम के ऊपर जा रहा है प्रोसेस होने के लिए. अब जब वो रैम पे गया तो रैम के ऊपर उसको और कौन से फाइल्स की जरूरत है रन कराने के लिए, या फिर रैम पे वो कितने देर के लिए वेट करेगा, कितने देर के लिए वो वेट करेगा. That all the things are done by the kernel. ये सारी चीजें कर्नल के बेसिक्स में होती हैं. तो कर्नल हैंडल्स ऑल द प्रोसेस एग्जीक्यूशन, सिस्टम कॉल्स, एवरी मैनेजमेंट, like the management of the time, the management of the memory, the management of the hardware, the management of all the scheduling process. आपके प्रोसेस को शेड्यूल करना, प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को मैनेज करना, आपके सिस्टम कॉल्स को मैनेज करना, आपके मेमोरी को मैनेज करना, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तक को मैनेज करना इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कर्नल. ये रिस्पांसिबिलिटी है आपके कर्नल. This is the responsibility of the kernel. Understood? अब समझ में आया? Yes, sir. Any queries over here? Yes, sir. Any more queries, anyone? No, sir. Kernel application. Yes, sir. Wait, थोड़ा डिमोस करना पड़ेगा मुझे. डिमोस. Yes, sir. So let's move ahead. Now we are having the types of BIOS, or we call it as a boot mode as well. हमारे पास types of BIOS है और हम लोग इसको boot mode कहते हैं. We call it them as a boot mode as well. So one is called as legacy. Second one is called as EFI, stands for extensible framework interface. Third one is EFI. Interface. Fourth one is your Apple, Mac, PC BIOS. That is similar to
to similar app in QA. Okay. So let's have a look at this thing. इन चीजों को देखो. So the first BIOS we are having called as legacy. जो पहला है वो है मेरे पास legacy. Cannot recognize the disk larger than this one is called as. Okay. So the legacy is known as the first BIOS. Legacy को सबसे पहला BIOS है. First BIOS, and this is how it looks like. इस तरीके का वो दिखता है. This is where you are going to have the blue interface, yellow text, and the white combination of white and yellow. This can only be operated with the help of keyboard. ये चीजें सिर्फ आपके कीबोर्ड के हेल्प से ऑपरेट हो सकती हैं. Right. This is called as a legacy. So in the legacy, the booting process, the BIOS is responsible for making the booting process faster. BIOS किस चीज के लिए responsible है? आपके booting process को faster करने and for making the things work in an efficient way और चीजों को efficient तरीके से काम कराने के लिए. So over here, if I say कि this legacy, so legacy what it says, it will first contact with your motherboard. So when you will power on, it will give you the interface of your motherboard, then it will give you the interface of your manufacturer, then it will give you the interface of your operating system, then you will interact with the user space. ये कैसे काम करता है? ये काम करेगा कि जितनी बार आप पावर ऑन करेंगे, तो पावर ऑन करें तो सबसे पहले ये आपको मदरबोर्ड का इंटरफेस देगा. उसके बाद जिस कंपनी का आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसका लोगो रिप्रेजेंट करेगा. उसके बाद आपको विंडोज का लोगो रिप्रेजेंट करेगा, जो भी विंडोज आप यूज कर रहे हैं, और उसके बाद ये आपको यूजर प्रोसेस देगा. तो मींस 4 to 5 स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस कंप्लीट पावरिंग अप. ये 4 से 5 प्रोसेस इन्वॉल्व है ये पूरे प्रोसेस को पावर अप करने के लिए. करेक्ट. सो दिस इज द थिंग कॉल्ड दिस. was new. जब ये न्यू था तो इसको यूज कर रहे थे एंड जस्ट वी यूज इट जस्ट फॉर पावरिंग अप द पीसी. हम लोग सिर्फ इसको एक चीज के लिए यूज करते हैं, अपने सिस्टम को पावर अप करने के लिए. दैट्स ऑल. आफ्टर दैट वी डोंट यूज इट एनीथिंग एल्स. और इसके अलावा और किसी भी चीज के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते. दिस इज आफ्टर दैट वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है. द नेक्स्ट वन कॉल्ड एज UEFI और EFI. जो नेक्स्ट मेरे पास है वो है EFI. EFI stands for extensible framework interface. It was an unstable one. ये unstable था, मतलब there was a two partition mode called as GPT. We are going to discuss further. हम लोग अभी जो partition modes होते हैं उनके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे. So over the partition mode, the EFI is able to work on both of them. EFI BIOS मोड जो था वो दोनों चीजों के ऊपर काम कर लेता था, MBR और GPT दोनों के. So it generally creates the uncertainty and the collision between the process of your powering up the PC
चुगल चुगल कर चुगल ना करे चुगल ना करे जी अबे दिखना है ना भाई छोटा सा These are the types of features that appear in the UEFI. These are the types of features appear in UEFI, and it was like, it looks like this. Here is that image. Here it is. ये कुछ इस तरीके का, where you can manage it with the help of keyboard. कीबोर्ड और माउस के साथ आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, एंड एवरी मैन्युफैक्चरर इज गोइंग टू हैव द डिफरेंट सेट ऑफ यूईएफआई इंटरफेस एंड द डिफरेंट सेट ऑफ मैनेजेबिलिटी एक्सेस. हर एक मैन्युफैक्चरर का अपना अपना मैनेजमेंट टास्क है, अपने अपने डिफरेंट सेट्स ऑफ द फंक्शनैलिटीज है जिनके प्रोसेस के ऊपर वो यूज करते हैं, व्हिच प्रोसेस दे वर्क. ओके, सो द यूईएफआई गिव्स अस द सिक्योर बूस्ट, सो इट ओवर द नेटवर्क एज वेल. तो नेटवर्क के ऊपर भी हम लोग सिक्योर बूट के प्रोसेस कर सकते हैं. द सिक्योर बूट we can also create a user and set the password as well. हम लोग एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं बायोस का, और वहां पे उसके पासवर्ड को भी लगा सकते हैं. Like every time you will power on, so you have to keep the BIOS password. So once the BIOS password is fixed, that cannot be changed or removed. एक बार अगर BIOS password लग गया तो वो लग गया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते. That is called as a secure boot. Support larger disk capacity, it can goes up to the 2.2 maximum. You can take it at any point. आप कितने भी maximum point पे लेके जा सकते हैं up to the 2.2. Faster boot time. So faster boot time represents over here. In this UEFI, what you will observe, when you power on the button, you will only interact with your manufacturer logo, and then you will have the user space. यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे ही पावर ऑन करेंगे, आप सिर्फ अपने मैन्युफैक्चर लोगो के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप पावर ऑन आपका यूजर स्पेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे. That's it. That is called as a faster boot times. CSM, compatibility support module, means that particular application, that particular resource is compatible with my system or not. So it always provided by this BIOS only. It is going to run or not. That is provided by the CSM. Graphical user interface support networking. So these are the multiple features over here. ऐसे करके बहुत सारे features में हमारे पास यहाँ पे. So this is called as a UEFI and a EFI. ये दोनों चीज हुई आपके UEFI और EFI. If I show you one more things, so the booting process between the BIOS called as legacy and this one, इन दोनों के बीच का आपका booting process. BIOS boot means over here legacy. It will go to the BIOS, then MBR, then bootloader, then kernel, then operating system. Okay. UEFI, bootloader EFI over here only, kernel, direct operating system. This is what the thing is processed. इस तरीके से आपकी चीजें प्रोसेस होती हैं. Understood, guys? Is this understood? Yes, sir. Any set of the Yes, video? sir. Yes, sir. Okay.
यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम? यस सर, कहाँ से आर्यन सर, श्रीवास्तव सर। चौधरी सर। कल मेरा यूट्यूब चैनल में मेरी ढका गई। मैंने एक लोग को मार दिया झापड़। उसने बोला क्यों मारा मेरे को झापड़। मैंने बोला उसको मैंने मार दिया झापड़, तो मैं क्या करूँ झापड़। हो गई झापड़। झापड़ से बात क्या करे अब मुलाकात। Okay, over here. So the next thing that we are going to discuss about over here is your boot. So what is boot mode? What is boot mode? Where you select the boot option means from where you want to boot your system. You want to select. You want to select. So select कर रहे हैं आपके 2-4 हार्ड डिस्क के, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। Here, the one more statement is how to switch the Windows 7, 8, 10. यहाँ पे किसने कहा कि हमको अलाउ करता है Windows 10, Windows 7, 8, 10 पे स्विच करने के लिए. So when over the multiple hard disk, if we have installed the multiple operating systems, अगर हमारे पास 10 हार्ड डिस्क या 4 हार्ड डिस्क है और चारों हार्ड डिस्क पे हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किए हुए हैं, so and they all are working in the same CPU और वो एक ही CPU के ऊपर काम कर रहे हैं, so every time I will power on, it will ask, अगर हम जितने बार भी पावर ऑन कर रहे हैं तो ये हमसे पूछे कि आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना है, which operating system you have to use. That is actually called as a boot menu. That is actually called as a boot menu. इसको हम क्या बोलते हैं? Boot menu. From where we select. जहाँ पे हम select करते हैं कि from where you want to get the things. हमें चीजें कहाँ से boot करानी है. So let me show you over here. I hope this is completely visible to you all. ये चीजें काफी visible होंगी आपको. So please select the boot device. Boot device को select कीजिए. USB, HDD, network, removable disk called as your pen drive, hard disk, your hard disk, CD-ROM, network boot. So these are things. And also from where you can select, और जहाँ पे आप ये select कर सकते हैं your BIOS option as well. जहाँ पे आप अपने BIOS option को भी select कर सकते हैं. You want UEFI और EFI. आपको UEFI चाहिए या legacy चाहिए. You can also select. So this is that. And how we can access this boot menu? हम इस boot menu को कैसे access कर सकते हैं? This is very easy to access the boot menu. Why? Because every manufacturers have the different set of boot menu. Okay. Every manufacturers have the different set of boot menu. I'm sharing this link as well. अब ये link भी आपके साथ share कर दे रहे हैं. Oh yeah. This is the thing. So hotkeys for the boot menu and the BIOS settings. So here you can have a look. We are having the manufacturers, boot key, and the BIOS key. So every manufacturer is going to have the different set of BIOS key or a boot. हर एक manufacturers का अपना अपना BIOS key होगा, अपना अपना boot key होगा, और वो different और वो अलग. It is nothing as such with the boot key or a BIOS key or if you are using the, so everyone is going to have the same. आप
लैपटॉप्स करे तो हर किसी का सेम होगा, नॉट एट ऑल, दैट इज गोइंग टू वो वेरी करेगा ही करेगा। यू कैन हैव अ लुक ओवर, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। आई हैव आल्सो शेयर्ड द लिंक, यू कैन हैव अ लुक इनसाइड योर फोन और इनसाइड योर लैपटॉप। मैंने ये लिंक भी शेयर कर दिया तो आप वहाँ पे देख भी सकते। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड दिस, अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी access the boot menu. Understood? समझ में आया यहाँ तक? सर आपको मैं कहीं देखा है। Quite well. After that, we are having the interfaces. Types of interface. So, there are two types of interface. हमारे पास दो तरीके के इंटरफेस हैं. First one called as GUI, stands for graphical user interface. Second one called as CLI, stands for command line. हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं जिनको बोलते हैं कमांड लाइन और ग्राफिकल, ठीक है? सो लेट्स हैव अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ, इन दोनों में एक डिफरेंस भी देखते हैं. बड़लात बड़लात CSI कमांड लाइन इंटरफेस के बताने में बताया मैंने. First, second, क्या होता है?
So this is the thing. These are the difference between the CLI and the GUI. Okay. So the CLI is difficult to use. Basically, you need to learn the command and all. कि what are the things need to be performed when the what are the things you are looking for. कुछ चीजों को perform करने के लिए हर एक ऑपरेशन को perform करने के लिए आपको command run कराने आना चाहिए. But in the GUI there is nothing as such. You just need to know how to hold the mouse. आपको सिर्फ ये समझना है कि आपको mouse कैसे hold करना है. Everything is visible. You can go and have a look. सारी चीजें visuals हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं. So well in the CLI it just give you the black screen and a white text. ये आपके terms आता है black screen और white text के term पे. So it generally consumes a less memory. वो generally आपका less memory consume करता है. But in the GUI it consumes higher memory. और ये GUI है तो GUI आपका ज़्यादा memory contain करता है. In the CLI we obtain the high precision. The precision says the correctness, the accuracy. प्रिसीजन यहाँ पे जो टर्म किया जा रहा है वो एक्यूरेसी करेक्टनेस के ऊपर बोला जा रहा है. We are going over the correctness. So over here in the CLI we can move on the higher precision. तो CLI के ऊपर हम लोग higher precision के ऊपर move कर सकते हैं. We can have the higher authorities and all. यहाँ पे बस higher authorities, higher terms. Why? Because everything is processed on the behalf of machine itself. We just need to give them the command. Okay, I need this one and this task. How does this task need to be processed? That is done by the PC. हम सिर्फ यहाँ पे कमांड दे रहे हैं कि ये चीज प्रोसेस होना चाहिए, कैसे प्रोसेस करना है, कब प्रोसेस करना है, ये सारी चीजें कमांड लाइन डिफाइन करते हैं. इवन दो बाय यूजिंग द कमांड लाइन वी कैन सेंड द मेल, वी कैन रिसीव द मेल एंड यू कैन परफॉर्म द फंक्शन. कमांड लाइन को यूज करके हम चीजों को मेल भी कर सकते हैं, परफॉर्म भी कर सकते हैं. वी कैन डू लॉट्स ऑफ द टास्क. बट इन द GUI एवरीथिंग इज डन ऑन द यूजर बेसिस. हर एक चीज यूजर बेसिस के ऊपर डन किया जा रहा है. यू वांट टू ओपन दैट फाइल, यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस फाइल, सो जब डबल क्लिक एंड एग्जीक्यूट, यू आर टेलिंग यू आर जस्ट गोइंग टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन एंड यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट फाइल. आप उस लोकेशन पे जा रहे हैं और चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. दैट इज व्हाट इट इज. ओके, so every that you need to install it, so you are providing the things but not in the CLI. चीजों को इंस्टॉल करना है तो आप सिर्फ वहाँ पे बता रहे हैं कि इसको इंस्टॉल करो, इसको इंस्टॉल करो, इसको इंस्टॉल करो, but not over here in the CLI. It does everything on the basis of their needs, on the basis of their term. ये सारी चीजें ये अपने terms के ऊपर use करते हैं. In the CLI is faster as compared to the GUI. CLI आपका faster as compared to the GUI. GUI is slow. GUI का जो response है वो काफी slow है. In the CLI we use keyboard, only keyboard. CLI में सिर्फ आप कीबोर्ड को यूज करते हैं और कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस को नहीं. GUI में आप माउस और कीबोर्ड दोनों को यूज कर सकते हैं एंड वी यूज द पॉइंटिंग डिवाइस एज वेल. और हम यहाँ पे माउस एज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज करते हैं एंड दिस इज द इंटरफेसेस लुक लाइक. जस्ट अ बेसिक इंटरफेस बिकॉज यू गेट फैमिलियर विद दिस थिंग एवरीवेयर. आप लोग इन चीजों के ऊपर हमेशा फैमिलियर होते हैं, so that is why I give it to the things.
So it is quite easy to understand what is CLI and GUI. अब इससे काफी easy है चीजों का समझना कि कौन सा CLI और कौन सा GUI. Is this understood, everyone? Yes, sir. Any queries till here? Any queries? No, sir. No, sir. GUI पहली So as we are moving ahead, so we are looking little bit the history sections. हम लोग थोड़ा history section को देख सकते हैं. History of Windows. History of Windows के ऊपर discuss करेंगे. So there was always a conflict, or we can say that there is always a conflict. We can say this. ये हमेशा एक conflict mode में रहता है कि first we come up with the Windows और first we come up with the Linux. हम Linux से पहले आए या फिर हमारे पास Windows पहले आया. So there was one situation when we come up with their operating system, we come up with their computers and all. जब हम computers इन सारी चीजों के terms के ऊपर आए, जब हमारा सारा चीज इन सारे calculations perform होने लगा operating system और machine के साथ, जब हमारे सारे calculations machine perform करने लगे, so there was a thing that we have to depend, we have to wait. हमें depend रहना पड़ता था, हमें wait करना पड़ता था. To do the single calculation, we have to wait for days. एक कैलकुलेशन को कवर अप करने के लिए हमें दिन के लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन हमारे पास टाइम लगता था. It takes days to accomplish one calculation. And again when the calculation is done, for the further processing means in the simple example if we take, तो एक ऐसे सिस्टम पे आए जहां यूजर अपने हार्डवेयर को खुद ऑपरेट कर पाए, खुद इनपुट दे और खुद आउटपुट ले, प्रोवाइड द इनपुट, गेट द आउटपुट on the same basis on that payload. That term only. So there the invention of the Linux happened. तब वहां पे Linux आया and Linux is known as a kernel operating system. Linux को हम लोग क्या बोल रहे हैं? Kernel operating system. So basically Linux Torvalds designed a kernel which called as a Linux. Like okay. So the I can say that Linux trolls invent Linux. in the year of 1991 मुझे पता है. from the University of Finland. कहाँ से बात? University of the Finland. So he designed one kernel. उन्होंने kernel design. Now this kernel was an open source. This kernel OS was an open source. ये जो kernel था वो open source program. It was an open source. So when we talk about the open source and what does it mean? अगर हम बात करें open source का, तो open source का मतलब क्या है? So the open source meaning is that you can exactly look the code and you can make the changes on your own. मतलब आप उस जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं आप उसको देख सकते हैं और उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं. That is what does it mean. इसका ये मतलब. Okay. So when it was an open source, when the things come up over here, so lots of the manufacturers company copied this one, downloaded this point. जब ये आपका मार्केट में आया तो इस चीजों को काफी लोगों ने डाउनलोड किया and one of them was Windows. उनमें से एक Windows थी. So we all know कि Windows is 95 is the first one, but basically there was a Windows 1, 2, 3.1, 4, then 95. Then 95. पहला 1, फिर 2, फिर 3.1, फिर 4, फिर 95. So the 1, 2, 3, 4 and 95 till 98
by the year of their appearance, when they got invented and when they are public. तो here यहाँ पे क्या हुआ कि उसमें से जब ये ओपन सोर्स था हमारा, तो इसको काफी लोगों ने कॉपी भी किया. Most of the people copied this thing as well. One of them was Windows as well. उसमें से एक आपका Windows भी था. So we all know कि Windows 95 is known as a first operating system. But basically that is out of the scope or out of the commerce concern. We are having the 1, 2, 3.1, then 95. 4 is also included. हमारे पास 1, 2, 3.1, 4 and फिर हम लोग 95 पर आए and August 1995. That is the reason it come up with the Windows 95. August 1995 में, तो that was the 95 represents the year. 95 आपके years को represent किया. This is what it says. Okay. Now from there it come up with again Windows 98. यहाँ से फिर इसने Windows 98 पे आया, which was on June 1998. After that it is trying to give some kind of the interfaces, the user interfaces. 95 और 98 में ये काफी यूजर को इंटरफेस देने का कोशिश कर रहे थे. So as the market of Linux was enhancing that time, जो market था Linux का वो बढ़ रहा था. Why? Because it was the first one and the lots of the people are downloading, just they can make the changes according to them and they can use the hardware. यहाँ पे क्या है कि ये चीजों को अपने हिसाब से चेंज कर पा रहे थे और यूज कर रहे थे. So that was running. वो लोग काम कर रहे थे. So the Windows things, the Microsoft things, we also need to come up with some kind of the environment where that they can use the command and all. हमें भी एक environment लाना चाहिए जहाँ पे वो सारी चीजों को use कर सके. So there they come up with MS-DOS. तब वो वहाँ पे आए एक MS-DOS called as Microsoft Disk Operating System. Okay, and it was on September 2000. So in the September 2000, they didn't get some kind of the succeed, like they didn't succeed a lot, but they made some kind of the name in the market. September 2000 में आपको MS DOS के ऊपर ज्यादा सक्सेस रेट नहीं मिला, लेकिन आपका एक जो नेम था वो मार्केट में आ गया. The name was in the market. Then when the name was in the market and he come up with their own set of this one, so he come up with the bit operating system. ये अब आया bit operating system पे, where he used 8032 microprocessor. नहीं 8086 microprocessor को इसने use किया. It uses 8086 microprocessor to make the things work in a very very fast way. So it comes up with the 32-bit operating system. So 8086 means 32-bit. जब हम 8086 bit operating processor का बात करें तो मतलब एक बार में 32 bits of the task को process करना. So that was really fast at that time. So when he appears with Windows XP, जब ये आया अपने Windows XP को in the name of October 2001 with 8086 microprocessor to make the things run in a very fast way, so it generally gets the market unlocked. तब 2001 में 8086 के साथ इसको ज्यादा मार्केट मिला. After that, when it gained the market and it tries to enhance it a lot, और इसने अपने आप को काफी enhance किया with the user interfaces, with the graphical interfaces and processing, it come up with a term called Windows Vista. या Windows Vista के ऊपर in the term of January 2007. So Windows Vista doesn't get popular a lot. Windows Vista doesn't get popular a lot. 6 साल बाद जब ये Windows Vista के ऊपर आया, so ये कुछ उतना popular गेन नहीं कर पाया. So on the behalf of Windows Vista, ये Vista के behalf में it come up with Windows 7 in the just October 2009. October 2009. So the interfaces of the Vista and 7
they both are similar enough. जो इंटरफेस था आपका विस्टा और 7 का वो सिमिलर इनफ था. After that it come up with the new interfaces called as 8. ये एक नए इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे आपका 8 आया. It didn't succeed a lot. The Windows 8 was the most unstable operating system and the most worst operating system I have ever seen. जो Windows 8 था वो इतना गंदा, unstable, not that much reliable. वो उतना इसका reliable नहीं था. After that we come up with the Windows 10 on the 30 September 2014. So why Windows 10 get popular a lot? Why Windows 10 get popular a lot? The necessity of getting the Windows 10 popular, the reason behind that, it announces that Windows 7 is no longer and the Windows XP is no longer with Microsoft now. जो Windows 7 और XP है वो अब आपका काम नहीं करेगा. But still your State Bank of India is works over the Windows 7. अभी भी आपका State Bank of India Windows 7 पे ही काम कर रहा है. So to gain the popularity of the Windows 10 is on the behalf of it have the contract with every manufacturers and this is कि they can give the Windows 10 pre-installed in the laptop. उनके laptop में Windows 10 pre-installed आएगा. And right now in the 2023 this time the Windows 10 is stable. अभी आपका Windows 10 stable है. It started from 2016. 20 it was stable a little, but at the time of 2023 your Windows 10 got stable a lot. ये 2016 से इसका स्टेबिलिटी फंक्शंस के ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ और 2020 तक में काफी ज्यादा काम हो चुका था और 2023 में like right now your Windows 10 is stable. In between it come up with Windows 11. इसी के बीच में इसने Windows 11 को भी इंट्रोड्यूस किया was on 5 October 2021. जो 5 October 2021 में था. And right now the same scenario as Windows 10. Same scenario है आपके Windows 10 के जैसा. In the 2021 might be very few of people are introduced with Windows 11. बहुत कम लोग जानते हैं Windows 11 के बारे में. Right now it comes in pre-installed term on every manufacturer's laptop. अब Windows 11 हर एक के manufacturer's laptop में आने लगा. That is why it gains the popularity of Windows 11. तभी ये पॉपुलैरिटी को गेन किया आपका Windows 11. एंड सेम स्टोरी Windows 11 is unstable. सेम स्टोरी है कि Windows 11 अभी भी अनस्टेबल है. So it will take at least 5 to 6 years to get it stable version. अभी भी 5 से 6 साल और लगेगा आपको Windows 11 का स्टेबल वर्जन आने में. Why? Because there is no difference between the 11 and 10. 10 और 11 में कोई डिफरेंस. Just the difference over their appearance. सिर्फ उनके appearance के ऊपर difference है. That's it. Functioning, processing, working, everything same. Just they enhances the appearance. सिर्फ उन्होंने appearance को enhance कर दिया. That looks more attractive as the previous one. जो ज़्यादा attractive. This is the thing on it. Now, if I talk about the Linux one, so Linux also come. It copied by the multiple people. ये बहुत सारे लोगों के साथ कॉपी भी किया गया. So in the Linux we don't say the edition or the versions, we call it as a flavor. Linux में हम version या edition नहीं बोलते, हम बोलते हैं flavors या distribution. So Linux have many distribution or we can say that flavors. Okay. And the flavors are a lot. We are having RHEL, we are having Unix, we are having Arch, we are having Plasma, we are having Mint, we are having Kali, we are having Parrot, we are having Fedora, we are having multiple. That name can be a snake as well. जो नाम है वो सांप के नाम से भी हो सकता है. तो that is a multiple sets. Even in all over the world, पूरे वर्ल्ड में only 2% of the user they uses the Linux operating system. सिर्फ 2% यूजर हैं जो Linux operating system को यूज करते हैं. But
97% of the servers in all over the world uses Linux operating system. जो 97% of the servers चल रहा है वो Linux operating system यूज करता है, not the Windows. Windows is just popular at the end user sections. Windows सिर्फ आपके end user sections के ऊपर popular है, not over the server sections. ये server sections के ऊपर उतना नहीं. The server sections where was the management and all. Server section जहाँ पे management इन सारी चीजों को करते हैं, so there it is popular. Now, I will take the more 2 to 3 minutes, guys, not more than that. Fedora. It divided himself into the two sections. Operating systems अपने आप को दो sections में divide किए हुए. First one is your client and another one is your server. So server OS and the client OS. Okay. Server OS we are having Windows Server. Windows Server NT. We are having 2000. We are having 2003. We are having 2005. We are having 8. We are having 12. We are having 16. We are having 19. We are having 20. So these are the types of the server. If I talk about the client, we are having Windows 95, 98, XP, Vista, 7, 8, 10, 11. These are the client operating systems. Over here as well. We have पढ़ाई करेंगे भाई अपन टाइम server OS. यहाँ पे server OS है. It can go with Fedora. It can go with Ubuntu. It can go with Linux. It can go with RHEL. It can go with Parrot. It can go with Mint. And we can have the main beauty of this Linux one. You can use it over the client as well as the server as well. आप इसको client और server दोनों जगह पे use कर सकते हो any kind of problem बिना किसी problem का. Just you need to use it accordingly. सिर्फ आपको उस term के लिए use करना है whatever the things you are looking for. So you can use the Fedora on the client side as well. Same as with Ubuntu, same as with Linux, same as with Unix, same as with RHEL, with Kali. So there are the multiple things. So these are the few history of your Windows and the Linux. ये कुछ history था आपका Windows और Linux से. Is this understood, guys? Yes, sir. Any set of the query detail over here? That's very nice, guys. If there is no any set of the query, so let's keep the session till over here. Session को यहीं तक रखते हैं. Let's meet tomorrow, and tomorrow we are going to discuss it further. कल हम लोग further discuss करेंगे. Okay. So thank you so much everyone for being the session. Right. Okay, sir. Thank you, sir. As you do. Thank you, sir. Thank you. Thank you.